है, काफ़ी लोगों से दोस्ती है और दोस्ती रहती है। ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ मिलना, बातचीत करना, मगर हम लोग जब 5 साल या 10 साल या कभी प्रीमियर पे मिलते हैं और कभी कभी पार्टी में मिलते हैं, तो उसी तरह मिलते हैं जैसे कि बहुत अरसे से मिले हुए हैं। एंड ये बिना ट्रस्ट के तो लाइफ ही नहीं है। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि मैं जब काम करता हूँ तो मेरे पे संदीप पे मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि संदीप जो है वो ऐसा ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। सो जब वो ओके करता तो मैंने कितनी बार मॉनिटर पे देखा होगा संदीप, हार्डली संदीप मुझे बुलाता था कि अनिल आगे देख ले। तो मुझे इतना ट्रस्ट था कि मैं मोस्टली 99 बट यूजली आई नेवर इतना ट्रस्ट है मुझे संदीप साहब पर। और जैसे हमारे जो चैनल जो हमारा प्लेटफॉर्म है हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, उन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। अब तक मेरी जब पहली बार जब शो शुरू हुआ तो उनसे बात हुई, उसके बाद ज़्यादा बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया, उन्होंने जो भी किया शो के लिए अच्छा ही किया होगा। तो मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि जो भी आदमी, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस फिल्म के अंदर, उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो बिना ट्रस्ट के फिर वो थोड़ा खटास रह जाती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ट्रस्ट पीपल whom you are working with। एंड कभी कभी बिट्रेल हो जाती है, वो बहुत कम होता है, आपको दुख भी होता है, बट मैं इस तरह का इंसान हूँ कि रात गई बात गई। अभी पता चलेगा, अभी रिलीज़ हुई है। आई थिंक इट्स डेफिनेटली समथिंग आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ, वर्क आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ, शो आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। आई थिंक it doesn't come around very often when something really connects across the board. I think it's been overwhelming, the response that the show has gotten. So yeah, I think to find out what it's done, I think you have to look into the future to see. But for me, I think this is definitely one of those milestones as far as my career is concerned. Yeah. So yeah, I think there's too much to learn from Sir. I think across the board, I think Sandeep will have his own stories to tell. I am fortunate enough to have gotten the opportunity to work with Sir on a second project, and he never ceases to kind of amaze you with. I think you've heard it all before, but it really is true. I think the zest with which he kind of approaches his work, the passion with which he approaches the role, the attention to detail, and also the kind of being a team player and wanting everyone to succeed, to have the overall wisdom and want for everyone to succeed so that the whole thing succeeds, and then so does, everyone kind of benefits. So I think Sir's experience and love has been invaluable on this project, I think, and I can speak for everyone, without any thought. एक चीज़ जावेद साहब ने कही है हमेशा, और मैं सबसे कहता हूँ ये, विच मेरे जहन में रहेगी वो बात, जावेद अख्तर साहब के, और ऋषिदा भी कहते थे, ऋषिदा के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो वो यही कहते थे कि यार काम करते रहना चाहिए। साथ में काम करते हैं तो फिर मिलना जुलना, बातचीत, चाय, कभी कभी घर पे आना जाना, डिस्कस करना, पैकअप के बाद वैनिटी वैन में बैठना, इन बिटवीन शॉट्स में बातचीत करना, तो ये दोस्ती कायम रहती है। फिर जब फिल्म ख़त्म होती है या शो ख़त्म होता है, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, सब बिज़ी हो जाते हैं। कोई दूसरी फिल्म में काम कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बोलते हैं यार चलो यार मुझसे स्क्रिप्ट मत लिखाओ, गाने तो लिखवा लो ताकि आपसे मुलाकात चलती रहे। और ऋषिदा हमें हमेशा कहते थे कि फिल्म और एक शो एक ऐसा होता है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे हम ट्रेन में जाते थे ना, जैसे बॉम्बे से दिल्ली जाते थे, तो एक ही कंपार्टमेंट में काफ़ी लोग बैठते थे, और सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में जब भी वो जो, तो उनसे दोस्ती हो जाती थी, प्यार मोहब्बत हो जाता था, खाना पीना साथ में होता है, बातचीत होती है। रोल्स यस नीड अ लॉट ऑफ प्रेप एंड समथिंग विच some roles which are completely opposite to your personality. Right. Because in real life I am not that overconfident, I am not that flamboyant, I am not so power hungry, I am not that I will go to any extent to achieve what I have to achieve. It's completely opposite to my, I am very very people's person. I am quite as people say, I try to laugh a lot, smile a lot,
energy, positivity, and it's completely opposite to my personality. तो मुझे अपने आप को बहुत कुछ roles ऐसे होते हैं जिसमें मुझे बहुत restrain करना पड़ता है. I have to be very understated, very low key. So for that, sometimes it becomes little. I have to prep for it so that I'm very, very calm from inside, mentally and physically and spiritually, for me to project that kind of body language and demeanor. And कुछ roles ऐसे भी होते हैं जो which are very much the way I am. So उसके लिए फिर वो इतना prep नहीं होता है. तो I just somewhere there's some roles are there where I just be myself, and I do it and I have a lot of fun. Not that that is also easy because so different roles have, जब मैं Ishwar I had to prep a lot, when I did Ishwar. When I did Lamhe, I had to really I'm not that kind of person what I played in Lamhe. और जैसे कि जो फिल्में मुझे याद आ रही हैं, आसानी से मशाल जो था, it came very natural to me because मैं चंबूर का था. I am brought up in that kind of an atmosphere of delinquents which were around me, the kind of kids. I've grown up with those kids. So I was very fortunate that early in my career I got those kind of roles which were very much, it came very easy to me. Mashal, Andar Bahar, Karma, these kind of films, and people liked me in those characters. And then slowly and steadily, like Wo Saat Din, Beta, these kind of films, Mr. India, were very not. I had to put in a lot of thought to it. And then, of course, more important that when I get these kind of films, the writing and direction, director कौन है और writing क्या है, that is very, very important. So मेरी पूरी responsibility है. I become more comfortable when these kind of uncomfortable roles come to me, but the director has that wisdom and experience, and he knows what he wants. So then I trust him and I do it. Get that kind of innocence and that kind of purity, you need certain kind of director. Like when I did with K. Vishwanath, I did Ishwar, I was just following him. And I did वो साथ में बापू साहब, I did शेखर के साथ मैंने मिस्टर इंडिया किए. तो उसमें उनमें खुद में एक बचपना है, एक मासूमियत है उन डायरेक्टर्स में. Javed Saab, when he is like a kid, he's got a sense of humor, the way he wrote it, so it became very easy. Now Subhashji is a very fun-loving, very flamboyant, has got a certain kind of body language, he loves music, he's larger than life. So I did those kind of roles with him, so I could follow him and imitate him and do those kind of films. और मेरी तारीफ हुई उनकी वजह से, उनके डायरेक्शन की वजह से I could do those kind of roles. So I've been, different preps होते हैं for certain roles and certain films. But once we have a great filmmaker behind it, or a good filmmaker and good writing, then half your or 70% of your battle is won. OTT का सिलसिला और ये जो छोटे पर्दे का सिलसिला and doing anything which the opportunity I got, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये OTT के लिए या ये टेलीविज़न के लिए या बड़े पर्दे के लिए. मेरे लिए ये है कि जो मेरा डायरेक्टर है, जो राइटर है, जो मेरी ऑडियंस है, उनको खुश होना चाहिए. और मुझे बिल्कुल कोई I think it's like a renaissance at the moment. It's the best time for all of us कि ये OTT का दौर जो शुरू हुआ है और जो काम का दौर जो शुरू हुआ है, इतना सारा काम है सबके लिए और इतना अच्छा काम हो रहा है और फिल्में भी बनेंगी. एंड मुझे कोई ज़्यादा बस OTT में ये होता है कि जैसे कि मैं शोभिता ही कह रही थी कि कभी कभी OTT में ये एडवांटेज होता है, टेलीविज़न पे जो हम लोग बड़े शोज़ करते हैं जिसमें एपिसोड्स होते हैं, कहानी लंबी होती है, यू गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू प्ले द कैरेक्टर in a much more, you can make it a little more detailed, and you get more time to develop your character and for storytelling, and it's great fun. उसका एक अलग ही मज़ा है काम करने का, और कभी कभी ज़्यादा भी मज़ा आता है, फिल्मों से ज़्यादा मज़ा आता है इस पे काम करने का. मुझे at least I've enjoyed doing 24 and Night Manager much more than a lot of my films I've done.